हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कारे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीम मैनेजमेंट टुवर्ड द प्रोडक्शन और क्वालिटी। ये असेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस पर से आप डिपेंड कर सकते हैं कि आपका कंपनी का परफॉर्मेंस वेदर इट इज़ प्रोडक्शन ओरिएंटेड या क्वालिटी ओरिएंटेड। सो इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ टू assess that your team is working on production or quality, or whether it is very much important to assess that to understand कि आपका टीम is oriented toward the production और quality। ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। एंड आपका टीम का परफॉर्मेंस एंड फोकस किस चीज़ पर ज़्यादा है ये भी उस पर से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द सब्जेक्ट। तो हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग टीम प्रोडक्शन ओरिएंटेड या क्वालिटी ओरिएंटेड। ये सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। सो बेसिकली प्रोडक्शन का फोकस रहता है दैट हाउ मच क्वांटिटी वी आर मैन्युफैक्चरिंग, हाउ फास्टली और विथ हाउ मच स्पीड वी आर प्रोड्यूसिंग द क्वांटिटी। और क्वालिटी का फोकस रहता है दैट हाउ वेल वी आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, यानी हम कैसा क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। ये दोनों एस्पेक्ट पर ये फोकस डिपेंड रहता है। और मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सरसाइज करना चाहिए कि आपका टीम किधर फोकस है और आपको क्या इस पर से रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन से मीट्रिक पर आपके मैनेजमेंट टीम काम करते हैं और उनके मैट्रिक्स क्या है। अगर प्रोडक्शन ओरिएंटेड टीम रहेगा तो उनका मैट्रिक्स रहता है दैट हाउ मच क्वान्टिटी वी आर प्रोड्यूसिंग एंड विथ हाउ मच स्पीड वी आर प्रोड्यूसिंग। और उनका मीट्रिक रहता है दैट दे आर ट्रैकिंग ऑन यूनिट पर आवर, मशीन अप टाइम एंड लेबर एफिशिएंसीज पर बात करते हैं। एंड रेगुलरली ये डिस्कस होता है दैट हाउ मच दे हैव प्रोड्यूस ऑन दैट डे। सो दीज आर द जनरल मैट्रिक्स ऑफ द प्रोडक्शन ओरिएंटेड टीम। एज पर एज द क्वालिटी ओरिएंटेड टीम, उनका फोकस रहता है दैट व्हाट इज द फर्स्ट पास सील, हाउ मच इज द डिफेक्ट रेट, हाउ मच इज द रिवर्क परसेंटेज, व्हाट आर द कस्टमर कंप्लेंट, and general discussion that how good we are producing on that day, how much good production we are produced on that day. So these are the general metrics of the team orientation toward the production and quality. Then second step is that what they are communicating with each other. अगर production focus team रहेगा then their conversation is regarding the how to finish the target quickly. उनका अटेंशन टुवर्ड द डिफेक्ट्स एंड प्रॉब्लम पर कंपेरेटिवली कम रहता है। इट इज़ मोर ऑन द प्रोडक्शन क्वांटिटी। और अगर प्रॉब्लम जो ऑब्जर्व होता है तो देन दे जनरली दे आर टॉकिंग अबाउट लेट अस फिनिश द प्रोडक्शन फर्स्ट देन वी विल फिक्स द प्रॉब्लम लेटर। सो दिस इज जनरल टेंडेंसी ऑफ द प्रोडक्शन ओरिएंटेड टीम। एज पर एज द क्वालिटी फोकस में टीम टॉक अबाउट द रूट कॉज, हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम, हाउ टू स्टॉप द प्रॉब्लम। स्मॉल इश्यूज पर भी सीरियस डिस्कशन होता है एंड छोटे छोटे प्रॉब्लम पर भी ये सीरियस डिस्कशन करके वो प्रॉब्लम फिक्स करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है उसमें। लेट अस फिक्स द प्रॉब्लम देन विल स्टार्ट द प्रोडक्शन। दिस इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ द क्वालिटी फोकस टीम। सो व्हाट इज द स्टेप 3? सो स्टेप 3 इज रिगार्डिंग दैट हाउ दिस टीम्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द प्रॉब्लम्स। सो एज पर एज द प्रोडक्शन टीम इज कंसर्न, they are ignoring the small defect and try to fix the problem secretly. And another worry the production team have that if the problem is known to the quality team, then they will slow down the production. These are the worries of the production oriented team. As far as the quality team, how they are responding to the problem. So as far as the quality teams are concerned, they are trying to stop the production if they observe the problem. And after addressing the problem, they will try to solve the problem with the help of 5i tools, fishbone diagram and SPC tools. With that they are trying to solve the problem. The fourth step is regarding the types of training given to this both team. As per the production oriented team, the focus is on the speed, production speed, machine efficiency and achieving the shift goal, and they are not focused on the quality issues and how to solve the quality problems. As per as the quality teams are concerned, the training is given on the quality tools, that is SPC, FMEA 7 QC tools, error proofing, and they are also trained to solve the
problem, how to fix the problem. They are given training on these issues. The fifth step is regarding that how the rewards are given to the production oriented team and the quality oriented team. So as per the production oriented team, the rewards are given on the achieving the production targets, bonuses and appreciation given on the production target, and they are not given the reward regarding the solving of the quality issues or reducing the rework percentage, defect percentage, customer complaints. So for this they are not awarded. As per as the quality teams, they are rewarded for the zero defect production, then Kaizen implementation, solving quality issues, and more focus is given on the delivering the good quality products. So for this the quality people are rewarded. To understand the focus of the team, that whether it is the production oriented team or the quality oriented team, अगर हम शॉप फ्लोर का राउंड लेंगे तो दैट इज गेम्बा वॉक जिसे कहते हैं. अगर हम गेम्बा वॉक लेते हैं तो प्रोडक्शन का बिहेवियर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका अगर प्रोडक्शन ओरिएंटेड टीम रहेगा देन दे ट्राई टू हाइड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट और दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट द डिफेक्ट साइलेंटली. एंड शॉप फ्लोर पर आपको क्वालिटी टूल्स या क्वालिटी रिलेटेड डिस्प्लेज आपको नहीं दिखाई देंगे. एज पर एज द प्रोडक्शन क्वालिटी रिलेटेड बिहेवियर अगर आप स्टडी करेंगे, सो क्वालिटी पीपल विल ट्राई टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम विदाउट फियर. एंड आपको शॉप फ्लोर पर विजुअल्स बोर्ड भी दिखाई देंगे, दैट इज पोकायो के काइजन, देन क्वालिटी अलर्ट्स, दिस टाइप ऑफ इश्यूज आपको दिखाई देंगे. आपको शॉप फ्लोर पर जो वॉक गेम्बा वॉक लेते हैं उसके से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका फोकस रहेगा यूनिट पर आवर, डेली टारगेट. सो यू कैन से दैट इज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड टीम. अगर क्वालिटी ओरिएंटेड टीम रहेगा दे विल टॉक अबाउट द फर्स्ट पास डिफेक्ट रेट, रिवर्क परसेंटेज. प्रोडक्शन ओरिएंटेड टीम आर मोर फोकस ऑन द स्पीड देन द कंसिस्टेंसी. दे विल ट्राई टू अचीव द क्विक आउटपुट एंड दे विल ट्राई टू टेक द शॉर्टकट्स फॉर दैट. As per as the quality teams are concerned, they are more focused on the consistency than speed, and they will focus on the standard work, accuracy, and quality, different quality tools, implementation on the shop floor. Production teams will try to hide the defect, और जो problem observe होता है they will try to fix it quietly without knowing other team members. क्वालिटी रिलेटेड जो टीम रहेगा दे विल ट्राई टू एस्केलेट द क्वालिटी इश्यूज बिकॉज दे आर मोर फोकस टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो इस पर से हम बैलेंस कैसा अचीव कर सकते हैं, दैट हाउ टू मेक द टीम वेदर इट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड और क्वालिटी ओरिएंटेड. बट एज पर एज द प्रोडक्शन इज कंसर्न, बोथ स्पीड एंड क्वालिटी बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग. सो टू अचीव द बैलेंस हमको उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा एज पर एज द क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज एंड प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज. जीरो डिफेक्ट और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए रिवार्ड देना पड़ेगा. देन जो वर्कर्स या ऑपरेटर अगर लाइन स्टॉप करता है इन केस ऑफ द क्वालिटी इश्यूज, सो उनको एम्पावरमेंट देना पड़ेगा दैट दे शुड हैव द अथॉरिटी टू स्टॉप द लाइन. एंड क्वालिटी रिलेटेड जो इश्यूज है उनको शॉप फ्लोर पर डिस्प्ले करना पड़ेगा. सो बाय दिस वे यू कैन अचीव द टारगेट दैट योर प्रोडक्शन शुड बी क्वालिटी ड्रिवन, एंड with the along with the quality you will also achieve the production target also, because if you deliver the good quality product then only you can achieve your production goals. So by this way you can achieve the balance of quality and production. हमने जो डिस्कस किया है दैट इज रिगार्डिंग द इज योर मैन्युफैक्चरिंग टीम प्रोडक्शन ओरिएंटेड और क्वालिटी ओरिएंटेड. हमने जो डिफरेंट स्टेप डिस्कस किया दैट इज व्हाट आर द मेट्रिक्स दे आर adapting to achieve their targets. Both प्रोडक्शन ओरिएंटेड टीम और क्वालिटी ओरिएंटेड टीम का कम्युनिकेशन का पैटर्न क्या रहता है, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द प्रॉब्लम्स, टाइप ऑफ ट्रेनिंग वी हैव गिवन टू देम, हाउ द टीम्स आर रिवॉर्डेड एज पर एज देयर अचीवमेंट्स आर कंसर्न. शॉप फ्लोर पर हम अगर गेम्बा वॉक लेंगे तो उसका क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देता है.
and how to achieve the balance of this, that your team should be production and quality oriented also. So now we are closing the video. आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू टू जॉइन माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच.